Good evening, friends. Welcome to Bookmap Hindi channel. Let's begin today's market analysis. And first, we go through this disclaimer. Okay. So this is general disclosure. All Bookmap limited materials, information, and presentations are for educational purposes only and should not be considered as specific investment advice nor recommendation. Trading futures, equities, and digital currencies requires involves substantial risk of loss and is not suitable for all investors. Past performance is not necessarily indicative of future results. All right. With that being said, let's move on. And यहाँ पर हम okay. So first, let's modify our AVWAP. यहाँ पर मैं modify कर देता हूँ. आज की डेट 7/01 7/01 ओके. यहाँ पर भी हम उसको मॉडिफाई कर लेते हैं 7/01. ऑलराइट. सो सबसे पहले हम नैस्डैक पर आते हैं. ओके. तो मैं यहाँ पर नैस्डैक में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं. राइट. सो wait a second. What is this? ट्रेडिंग व्यू. देखो नैस्डैक में इंपॉर्टेंट लेवल सबसे पहले हम देख लेते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास में है मेटा, अमेजोन. यस. ओके. I have my charts now. एंड सबसे पहले हम यहाँ पर एनक्यू का जो फ्यूचर्स है वो लगा लेते हैं यहाँ पर. एंड लेट्स फोकस ऑन दिस वन. राइट. सो सबसे पहले हम जाएंगे मे बी आरली चार्ट पर. हम एक बार हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर को चेक कर लेते हैं. ओके. सो राइट. मार्केट नैस्डैक में यहाँ पर जो है एक अब चॉप करता हुआ नजर आ रहा है. राइट. somewhere we have our highs at 20,260 something. 73 is the high and at the lows we have this 737. राइट. तो मार्केट के पास में अराउंड 500-600 पॉइंट्स का जो है बॉक्स है जिसके अंदर में मार्केट अभी के लिए चॉप कर रहा है ऑन द हायर टाइम फ्रेम. राइट. एंड डेली कैंडल का अगर हम यहाँ पर एक बार व्यू देखेंगे तो व्हाट आर वी लुकिंग एट इज मार्केट मल्टीपल टाइम्स हायर लेवल पर अटेम्प्ट कर रहा है. राइट. वी आर क्लाइंबिंग हायर बट देन इस एरिया में जो है मार्केट को समवेयर रेजिस्टेंस फेस हो रहा है. फर्स्ट सेल ऑफ काफी अच्छा देखने मिला हमें. सेकेंड टाइम मार्केट ने अगेन ट्राई किया, ऑप्शन हायर किया, but second time we opened at this price, moved higher but then closed at this price. right. एक बार भी क्लोजिंग बेसिस पर मार्केट ने इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं किया है अभी तक. दैट शोज समवेयर दिस जोन नीड्स टू बी क्लियर्ड आउट. राइट. तो यहाँ पर जो है ये प्राइस लेवल जो कि आपका 20,000 के ऊपर है, 20,044, 20,050, ये जोन जो है प्राइस का, ये एक बार अगर क्लोजिंग बेसिस पर मार्केट निकालता है देन इट माइट बी अ लिटिल बिट बुलिश. दैट मीन्स कि हमारे पास में एक प्राइस का जो है नंबर समझ में आ रहा है. 20,050 का प्राइस लेवल जो है हायर लेवल पर वो एक इम्पोर्टेंट प्राइस लेवल है. अबव दैट हमें एक अच्छा जो है बुलिश मूव देखने को मिलना चाहिए. राइट. एंड ऑल द बायर्स माइट गेट इन, ट्राई टू गेट इन अबव 20,050 प्राइस लेवल. ओके. 50 to 100 जोन. राइट. एंड उसके बाद में हमें एक अच्छा मूवमेंट हायर साइड देखने मिल सकता है. दैट कैन पुश इट अप अंटिल 20,200. ओके. तो यहाँ पर एक तो ये पॉइंट है जो कि नैस्डैक में हमें समझ में आ रहा है. दूसरा कि अब अभी मैं आपको ईएस का चार्ट और यहाँ पर चेक कर लेता हूँ.
तो लुक एट दिस, ईएस में भी समवेयर रेंजिंग चार्ट बन रहा है, राइट? यहाँ पर भी रेंजिंग चार्ट बन रहा है। इवन यहाँ पर तो एक डबल टॉप जैसी फॉर्मेशन हो गई है, राइट? अगर मार्केट ने ये जोन ब्रेक किया देन इट विल बी अ ट्रिगर फॉर सेलिंग, एंड यहाँ पर सिंपल एज दैट, यहाँ पर एक डेली चार्ट में जो है स्लाइटली सेलिंग टाइप मार्केट में जो है मूवमेंट देखने मिल सकती है। सो हायर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम का जो आपका एम पैटर्न है वो 5010 के 5510 के बिलो जो है ट्रिगर हो जाएगा, राइट? एंड दिस विल बी एन प्ले आउट बिलो 5510। उसके ऊपर मार्केट में एक चॉपी एरिया है, राइट? 62 टू 510। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि किस लेवल के ऊपर हमें बुलिश रहना है। वो हम यहाँ पर अगर हम नोटिस करेंगे तो हमें मिल जाएगा व्हाट आर द प्राइस लेवल जिनके ऊपर हम जो है बुलिश रह सकते हैं। सो लेट्स चेक दिस, एंड यहाँ पर आप नोटिस कीजिए किस तरीके से मार्केट समवेयर इस जोन से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, राइट? यहाँ से होल्ड किया, होल्ड किया, होल्ड किया, एंड देन यहाँ से आप हायर साइड चलना मूवमेंट स्टार्ट किया सेकेंड टाइम। इवन यहाँ पर जो है इस बार भी यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट जब आया था यहाँ पर, तब भी मार्केट ने काफी अच्छा यहाँ पर होल्ड करने का कोशिश किया है, एंड स्टिल वी आर होल्डिंग दिस 5516 प्राइस लेवल, राइट? राइट नाउ वी आर ट्रेडिंग एट 530 जोन, ओके? तो वो जो 5515 टू 510 का प्राइस लेवल है, ये काफी अच्छा मार्केट अभी होल्ड कर रहा है, ओके? एंड जब तक ये यहाँ पर होल्ड कर रहा है, वी कैन लुक फॉर देम टू मूव हायर इनटू 46 45, ये प्राइस लेवल में मार्केट का मूवमेंट को हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके? एज लॉन्ग एज वी आर अबव दिस 15 प्राइस, यहाँ पर हम 46 को जो है हिट करते हुए देख सकते हैं हायर साइड में। वो हमारा एक प्लान रहना चाहिए, ओके? सो हमने ईएस और एनक्यू दोनों के बारे में बात कर ली है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर चार्ट ऑन बुक मैप, ओके? Let us fix this here. Like this. Video. Okay, so ओवरनाइट सॉरी प्री मार्केट ओपनिंग सेशन में एनवीडिया स्लाइटली ऊपर आने का कोशिश कर रहा है, बट समवेयर 124 इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, जो कि काफी टाइम से हम नोटिस कर रहे हैं। डेली जब मार्केट में आते हैं तो 124 मार्केट में एक अच्छा रेजिस्टेंस के जैसे काम कर रहा है, राइट? एंड बार बार मार्केट उसको निकाल नहीं पाता ऊपर। एक बार निकाल के गया था हायर लास्ट आई थिंक या लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गया था मार्केट $127 तक, वहां से फिर वापस लोअर आया है। तो ये मार्केट में अभी भी 124 का अभी भी प्राइस जो है वो एक रिजेक्शन जोन बना हुआ है, ओके? सो देखते हैं आगे मार्केट में क्या रहेगा। एक बार मैं यहाँ पर राइट चेक कर लेते हैं कोई न्यूज तो नहीं है इवेंट बिफोर मार्केट ओपन्स, राइट? तो यहाँ पर मैं कैलेंडर एक बार चेक कर लेता हूँ, दूसरा है investing.com, राइट? सो राइट नाउ वेयर वी आर कि यहाँ पर है। सो लुक्स लाइक हमारे पास एक न्यूज है एट 7:30 PM, राइट? ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा रिलीज, ओके? दैट्स अ रेड, यानी कि काफी इम्पैक्टफुल न्यूज है, ये हाई इम्पैक्टफुल न्यूज है। सो लेट्स सी, यहाँ पर है एक्चुअल नंबर ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। एंड देखते हैं यहाँ पर 49.2 जो है एक्सपेक्टेड है, प्रीवियस 48.7 था, राइट? एंड 49.2 इज एक्सपेक्टेड। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। इसके बाद में आई थिंक आज नहीं है कोई भी न्यूज, सिर्फ एक यही है, ओके? सो दैट्स एन इम्पोर्टेंट वन टू गेट आउट। राइट, सो यहाँ पर मार्केट अभी भी होल्ड कर रहा है इन दीज एरियाज, एंड मैं फिलहाल यहाँ पर एब्जॉर्प्शन टूल को जो है रिमूव कर देता हूँ बिकॉज इट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। लेट्स रिमूव दिस,
अभी हमारे पास हाल फिलहाल में जो नेस्डेक में लेवल्स है वो प्ले आउट होते हुए नजर आ रहे हैं, राइट। यस्टरडेज वैल्यू एरिया लो इज एट 988 एंड यहाँ पर मार्केट 988 दैट इज 90 यार, इस प्राइस लेवल के ऊपर जा नहीं पा रहा है, जो कि कल का वैल्यू एरिया लो है, राइट, समवेयर एट दिस प्राइस। एंड देखते हैं अभी मार्केट में, यहाँ पर अभी चॉप है मार्केट में मोर लाइकली 900 रीजन तक। तो आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड यहाँ पर कुछ भी जो है एक अच्छे मूव के लिए कोई आइडिया नहीं है फिलहाल। यहाँ पर मार्केट चॉप करता हुआ नजर आ रहा है। एक डिसेंट मूव हमें जो है वो देखने मिल सकती है। मार्केट अगर 900 के बिलो पुल डाउन करे, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा समवेयर एट दिस प्राइस नियर टू 900 व्हाट हैपेंस, आइदर वी यू नो accumulate फॉर अ बाउंस बैक या फिर यहाँ से जो है ब्रेक डाउन, राइट। एंड ईएस के लिए हमारे पास में प्राइस लेवल जो होंगे, ओके, सो ईएस के लिए हमारे पास में इंपॉर्टेंट लेवल है 5510 का, राइट। बिलो दैट, अबव दैट 519 का एक लेवल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 519.75, close to 520 we can get that, and below that 510 510 जो है बिलो दैट, ये हमारा जो है डेली टाइम फ्रेम का एम पैटर्न यहाँ पर है। एंड इस एरिया में यस्टरडेज वैल्यू एरिया लो है। तो ये दो पॉइंट है, देखना है क्या मार्केट ये दोनों को होल्ड कर पाएगा या नहीं। एंड नेगेटिव व्यू है अभी भी मार्केट का, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पर मार्केट जो है ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, राइट। तो वहां से हर बार जो है सेलिंग देखने को मिल रही है हमें। सो लेट्स सी क्या हम यहाँ पर इस एरिया में होल्ड कर पाएंगे या फिर नहीं। एज लॉन्ग एज इट लुक्स लाइक मार्केट में अभी भी जो है नेगेटिव ही मूवमेंट अभी भी जारी है, तो राइट बिलो दैट 520s 550s लेट्स सी एक मूवमेंट हमें 550s के बिलो देखने को मिल सकती है अगर ये 550s पर ब्रेक डाउन करता है तो। $555s, okay, we are coming up ahead. Let's see, can they get it above on the higher levels? Into those 60s or not? Trying to hold this zone. यहाँ पर वॉल्यूम भी है आप देखेंगे तो 60 प्राइस लेवल एक इम्पोर्टेंट है। एंड आई थिंक यहाँ पर okay, I don't know how. Okay, for some reason I don't have that anymore. So anyways, let it be. I think we are looking for that break on the lower side. Into those 60s. Trying to hold that level. Look at this. 60s के पास में मार्केट वापस पुश किया एंड वी आर स्टार्टिंग टू लूज बायर्स up into those 60s. Let's see. They have transacted, यहाँ पर जो है अच्छा ट्रांजैक्शन भी हुआ है
So let's see. Let's wait for them. मैं यहाँ पर एक डाउन साइड की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एज लॉन्ग एज वी आर होल्डिंग दिस 500 एंड 970 एरिया, राइट. यहाँ पर एक डाउनफॉल की मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ into that how which level 870 और 900 प्राइस लेवल, राइट. एक हायर टाइम फ्रेम से जो है एक मार्केट में डाउनफॉल दिख रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर जो है मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. बाकी लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या मार्केट मूवमेंट दिखाएगा. लेट्स चेक एनवीडिया, व्हाट इज इट डूइंग. ओके, एनवीडिया में अभी भी देखोगे तो 124 का लेवल काम कर रहा है, राइट. वी आर हैविंग गुड रिजेक्शन फ्रॉम देयर. एनवीडिया में अभी भी 124 का लेवल जो है वो काम कर रहा है, राइट. एंड वी आर होल्डिंग दैट एरिया. सो लेट्स सी. Now let me check YM. Okay, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, right. We are in the lower part of the volume profile, so still looking bearish for that move. Let's see. 67, 70s. $966. We have gone till the VWAP area and looking good buyers. अब ahead those sellers. यहाँ पर काफी अच्छा बाइंग मूवमेंट देखने मिला है. Eight minutes to market open and let's see how it goes. Near to the VWAP activity is happening. यहाँ पर कुछ खास अभी बाइंग मूवमेंट दिखा तो नहीं है, बट हो सकता है कि कंटिन्यू करें and we might get to see a move till 82s 85s maybe, right. यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल का ये जो हायर जोन है, राइट, मार्केट यहाँ पर इसको टेस्ट करने के लिए एक बार ऊपर आ सकता है समवेयर एट दिस प्राइस एंड मे बी हमें एक 80s के पास में रिजेक्शन देखने को मिले. दैट्स अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है एंड प्राइसेस मूव करते हैं तो ये एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस रहेगा, एक लेवल अबव 80s. व्हाट हैपन्स एंड क्यों है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो इसके बियॉन्ड ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं है, राइट. तो जब वॉल्यूम्स एंड हो जाएंगे तो मैं उस मोमेंट पर देखना चाहता हूँ कि हाउ दी सेलर्स आर रिएक्टिंग एट दिस प्राइस इस जोन में एंड उसके बेसिस पर जो है मैं कुछ यहाँ पर प्लान करूंगा. मे बी सेलिंग के लिए यहाँ पर जो है इस एरिया में देखना पसंद करूंगा अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि मार्केट में अभी भी जो है हायर टाइम फ्रेम में
बेरिशनेस अभी भी जो है वो इंटैक्ट है। एंड मीनवाइल यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा ईएस में भी थोड़ा सा बाउंस कर रहा है डेज लो के पास से, राइट। नो सॉरी, डेज लो नहीं है, राइट। एक बार वापस ऊपर आ रहा है मार्केट।
मार्केट का यहाँ पर जो पहला रिएक्शन था इस लेवल के आसपास वो हमें नहीं देखने मिला, बट वी गॉट टू सी रिएक्शन नियर टू दैट सेकेंड एरिया, राइट। आई थिंक न्यूज या 7:30 न्यूज आने वाला था जिसके बारे में हमने बात भी की थी, राइट। ISM PMI मैन्युफैक्चरिंग नंबर, so this has come out to be negative 48.5, which is not good for currency, right? Now let's see price में क्या behavior दिखाई देता है, how the price is going to be factoring in this movement. NQ में भी एक हायर साइड मूव आ रहा है from the bottoms. Okay, so as we spoke, YM is going to be a good opportunity to sell, right? It's like news के पहले इसको pump किया and then now after the news they are trying to dump it below 680. I'll be much more comfortable, right? यहाँ पर थोड़ा और aggression देखने मिल जाए अगर, so let's see how this turns out. Near to that 700 part. Okay, it's looking bearish. Now you see this lower area में buyers अभी ज़्यादा कुछ interested दिख नहीं रहे हैं. आई थिंक YM एक अच्छा सेटअप बन सकता है. एटलीस्ट 600 तक तो यहाँ पर एक मूव देख सकती है हमें इनटू दो 600 एरिया, राइट. सो एनीवेज गाइस, आज के लाइव को हम यहीं पर जो है रैप अप कर लेते हैं. ओके, एंड आई विल सी यू इन अनदर लाइव स्ट्रीम. ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जहां से आप जो है परचेज कर सकते हैं बुक मैप प्लेटफॉर्म को, राइट. सो गो अहेड एंड डू साइन अप फॉर द प्लेटफॉर्म. ओके, थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन. आई अप्रिशिएट